Welcome to the chapter called Sound. How do you come to know that period is over in the school? You can hear the bell ring. You come to know easily that someone is at your door because he knocks. You hear the sound of the doorbell. Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. You might have played a game called hide and seek. In this game, the person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? In all these examples, sound is the key factor. Without sound, a lot of things we miss in life. Sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with another. We hear a variety of sounds in our surroundings. Make a list of sounds you hear in your surrounding right now. So right now, not only you are listening to the lecture, but there is also more types of sound which are falling into your ear. But you are paying attention to my sound. Therefore, the other sounds you cannot recall. But stay silent for 30 seconds and then you will be able to hear more sounds. In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium. How is that sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound and why are some sounds louder than the other? We shall discuss all this in this chapter. So first topic of the chapter is how is sound produced? And if I have to give a one word answer, how is sound produced? The one word answer is vibration. Any kind of vibration most of the times produces sound. Touch the school bell when not in use. It will not be vibrating. But when you touch the school bell, when somebody has hit it hard, you will see that it is vibrating. And only a vibrating school bell will make a sound. Take a metal plate, hang and hit it with a stick. You will hear sound. Why is sound produced? Because when you hit it with a stick, you are applying force. And because of this force, the pan starts to vibrate. And till the time pan is vibrating, you will be able to hear sounds. So vibrating sounds start from the pan, reach your ears, and that is how you are able to hear sounds. As you learnt in class 7, and to and fro back and forth motion of an object is called vibration. Vibration का definition है, लिखो, to and fro back and forth motion of an object is called vibration. To and fro means आगे पीछे. Back and forth also means आगे पीछे. So any kind of vibration is a back and forth motion. When tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce sound. तो रबर बैंड को खींचो और फिर उसको प्लग करो तो you will listen to a particular type of sound, but only till it is vibrating. Take a metal dish and pour water in it. When you take a metal dish and pour water and hit it with a spoon, you will observe something interesting. You will observe ripples. Ripples का मतलब होता है waves. And waves are created and you can see those waves inside the water which is there in the plate. So first time, this activity is telling you that first time hit the plate full of water and you will see waves in the water. But second time when you are hitting
hold the dish with your hand. हाथ से डिश को पकड़ के रखो. Do you see any difference? Do you listen to any difference? The answer is yes. The difference is here there is a loud and ringing sound. Tung. But when you are holding the dish with your hand and then hitting the spoon, it's a low sound and it is not ringing like tuck. टंग टक. दोनों में फर्क है. क्या हुआ? What is the problem then? The problem is sound is created only by vibration and your hand is stopping that vibration. When you are holding the plate and then hitting it, you are stopping the vibration, therefore the sound is not as powerful as earlier. Which means sound needs vibration. If you touch something, the vibration will stop, the sound will stop. Edge with a spoon. What will you hear? Well, a sound. Again, strike the dish and then touch it. You will feel the dish vibrating. Strike the dish again. Now look at the surface of the water. Can you see waves there? Now hold the dish. What change do you observe on the surface of the water? You got it. There are no waves seen on the surface of the water. We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us. But in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. तो ये एग्जैक्ट डायलॉग जो अभी वीडियो में देखा वो टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ है. एंड विच वाइब्रेशंस वी कैन नॉट सी? द वाइब्रेशंस ऑफ अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक आता है तो पूरा अर्थ वाइब्रेट करता है. उससे साउंड प्रोड्यूस होता है कि नहीं? आंसर इज यस, होता है. लेकिन तुम सुन सकते हो कि नहीं? आंसर इज नो, यू कैन नॉट लिसन टू दैट साउंड. वाई? बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल. एम्पलीट्यूड is kind of a volume, and the volume is so small that you cannot listen to the vibrations of earthquake. But if you make a musical instrument, something like this, with a hollow coconut shell, this is the coconut shell, उसके ऊपर एक तार बांधा है और उसको तुम यहाँ से घिस रहे हो तो वो तार वाइब्रेट करता है. It's like a handmade guitar. Many of you might have seen manjira. In English, we call it cymbal, and ghatam, and नूट, and करताल. ये सब हिंदी नाम है. तुम्हें इच्छा है तो तुम गूगल करके देख सकते हो कि घटम, नूट और करताल कैसे दिखते हैं. But they all are basically some type of musical instruments. And these musical instruments are commonly used in our country, and these instruments are simply beaten or struck. Can you name few other musical instruments of this type? No, we don't need to. Any musical instruments, it's a fixed rule that every single musical instrument works on vibrations. It is able to produce sound because there is vibration. Look at this activity. इसको हिंदी में कहते हैं जल तरंग. जल तरंग.
या जल तरंग एज पर टेक्स्ट बुक. और ये बहुत सिंपल है जल तरंग. यू हैव टू टेक glasses made up of metal or glass and arrange them in a straight line and fill different levels of water, and then you have to hit it with a stick. You will find beautiful sound created by this homemade instrument. That was Jal Tarang for you. When we pluck the string of an instrument like sitar, the sound that they hear is not only that of the string. हाँ, ये एक मैं जब छोटा था तो आई वांटेड टू आस्क समबडी बट नोबडी हैड द आंसर. ना मैंने किसी को पूछा कि गिटार में या सितार में या तंबूरा या मैंडोलिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, द प्लेयर ऑलवेज वाइब्रेट्स द स्ट्रिंग्स. तो अगर स्ट्रिंग ही वाइब्रेट करनी है तो इतने बड़े बड़े जो हाथ में उठा भी नहीं सकते ऐसे गैजेट्स बनाने की क्या ज़रूरत है. सिंपल स्ट्रिंग्स को खींच के एक जगह पे लगा दो और फिर बजाओ. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली स्ट्रिंग्स विल नॉट प्रोड्यूस इनफ साउंड दैट यू हियर. साउंड है, वाइब्रेशन है, लेकिन खाली स्ट्रिंग्स अगर खींच के कहीं लगा दोगे तो उससे जो साउंड आना चाहिए, बड़ा साउंड, वो नहीं आता. एंड देयरफॉर नेक्स्ट टू द स्ट्रिंग देयर इज अ वुडन कैबिनेट इन अ गिटार of different shapes and sizes, and depending on this body the quality of sound changes. तो सितार, गिटार, वायलिन, मैंडोलिन सब सिमिलर फैमिली है बट सबके साउंड अलग है बिकॉज उनका शेप और बॉडी अलग है. बट द फैक्ट रिमेन्स दैट whenever we pluck the string of instrument like sitar, the sound that we hear is not only of the string. The whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. तो गिटार में स्ट्रिंग वाइब्रेशन के साथ साथ ये पूरा बॉडी भी वाइब्रेट करता है, and that creates beautiful sound. Similarly, when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but the whole body of the instrument. मृदंगम एक टाइप का तबला और ढोलक फैमिली से बिलोंग करता है. इट इज समथिंग लाइक दिस, જે ખોળામાં મૂકી અને લેફ્ટ અને રાઈટ સાઈડથી વગાડવાનું હોય. તો ये जो आवाज है, that is not because you are striking and the membrane is vibrating. It is the entire thing which vibrates and produces good quality sound for us. How do we produce sound? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट, उसको मारो खींचो तो आवाज आएगा. बट यहाँ पे वी डोंट प्लक एनीथिंग, वी डोंट हिट इट. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? लेट्स सी हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड. स्पीक लाउडली फॉर अ व्हाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी एंड पुट योर हैंड ऑन द थ्रोट. अभी मैं बोल रहा हूं और बोलते बोलते यहां पे हाथ रखा है तो I can feel the vibrations, and there is internal vibrations happening. That's why sound is produced. In humans, the sound is produced by the voice box जो यहाँ होता है.
Voice box in scientific language is called larynx. Put your fingers on the throat and find the hard bump that see you move when you swallow. ये जो है यहाँ पे साउंड क्रिएट होता है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स है, एंड दिस इज व्हाट वाइब्रेट्स व्हेन यू स्पीक. This hard bump, this part of the body is known as voice box. It is at the upper end of the windpipe. मतलब voice box के नीचे windpipe होता है. तो ये voice box है, नीचे there is a pipe which is called windpipe. और windpipe literally wind नीचे लेके जाता है. कहाँ पे? Lung number 1 and lung number 2. Lungs need oxygen to breathe. तो नेचर ने हमारा डिजाइन कैसा किया है दैट व्हेन वी ब्रीथ वी डोंट स्पीक. ये समझने वाली बात है और ट्राई करना. व्हेन यू आर ब्रीदिंग यू कैन नॉट स्पीक, बट यू कैन ओनली स्पीक व्हेन एयर कम्स आउट ऑफ योर लंग्स. तो हवा जब अंदर जा रही है तब गारंटी तुम बोल नहीं सकते, बट जब बोल रहे हो तो हवा बाहर आती है. और उसका प्रूफ है वाइल स्पीकिंग कीप योर hand here, you will feel the air is coming out from your mouth. तो 1 लीटर हवा अंदर ली तो 1 लीटर निकलनी चाहिए, बट जब बोल रहे हो तो 1 लीटर हवा अंदर जाती है और थोड़ी 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 बोल बोल के निकल जाती. तो एक्सहेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो व्हेन यू आर स्पीकिंग नॉन स्टॉप, you are breathing and the air is coming out through the voice box, and this moving air creates vibration. तो हमारा जो आवाज का जो गिफ्ट है, that voice box works only on the basis of passing air, and that air passing has to be outside, not inside. तो जब हवा अंदर जाती है तो वॉइस बॉक्स आवाज नहीं कर सकता, बट जब हवा बाहर आती है तो वॉइस बॉक्स आवाज करता है. उसका भी एक सिंपल साइंटिफिक रीजन है. इट्स अ वंडरफुल डिजाइन बाय नेचर. नेचर हैज क्रिएटेड नोज so that you can take the air inside. उसके बाद sorry about my horrible drawing. So nose is meant for breathing, taking air inside, and nose takes all the air through the windpipe to the lungs. तो नाक से हवा लंग्स में जाती है और इस रास्ते में वॉइस बॉक्स नहीं आता है. बट जब लंग्स से हवा बाहर आ रही है तो while moving out the air takes a diversion and it goes through the voice box and comes out of the mouth. तो inhale, exhale. Inhale is maximum through nose, और नोज से वो लंग्स में जाता है. लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा हवा फेंक देनी है, वो फेंकने से पहले हम उसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं टू स्पीक, टू वाइब्रेट आवर वोकल कॉर्ड्स. सो वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स सब सेम है. एंड वी हैव 2 vocal cords which are stretched across the voice box or the larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air. एक पतला सा स्लिट होता है, you see, and through this slit the air passes, and when air passes through this slit it creates vibration which is called sound. Let me show you a real vocal cord. So you saw that how our vocal cords work. There are 2 vocal cords and there is a slit and it vibrates. But वो बीच में खुल जाता था, तब सांस अंदर ले लिया जाता है
and then when the air is coming out, the vocal cords vibrate. When lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना. ये कैसे चेंज हो रहा है? माई मसल्स आर वर्किंग. हवा तो वही है, वोकल कॉर्ड भी वही है, बट आई कैन स्ट्रेच एज मच एज आई वॉन्ट टू. So this is muscles, my hand is muscle, this is my vocal cord. So if I put less pressure, look at the shape. और ये बहुत कड़क है, तो थोड़ी देर बाद मेरे मसल्स थक जाते हैं. But if I put more pressure, look at the shape. So less pressure, more pressure, less pressure, more pressure. These muscles help the vocal cords to create different types of sounds. So muscles attached to the vocal cords can make the cord tight or loose. Tight and thin तो अलग आवाज आएगा, and if they are loose and thick तो अलग आवाज आएगा. The vocal cords in men are about 20 millimeters long. In women these are about 15 millimeter long. Children have very short vocal cords and this is the reason why the voices of men, women and children are different. तुम्हारे वोकल कॉर्ड का साइज के हिसाब से तुम्हारे आवाज की क्वालिटी डिसाइड होती है. This is a silly activity which you can do at home if you want to. Take a stick, ice cream stick. Take another ice cream stick. और दोनों आइसक्रीम स्टिक के बीच में एक रबर बैंड लगा दो जो ऐसे पास होना चाहिए. एंड देन टाइट वेरी टाइटली फ्रॉम हियर एंड हियर. अब जब तुम ये लड़की की तरह फूंक मारोगे तो इट बिकम्स अ स्मॉल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज दिस जेंटलमैन डूइंग? व्हाट ही इज डूइंग is what I can also do very easily. All you need is a piece of paper and hopefully it will work. एक पेपर लो, उसको आधा फोल्ड करो और जो फोल्ड है वहां पे एक यू शेप का कटिंग कर लो. बेसिकली होल हो जाएगा. होल्ड इट बिटवीन टू फिंगर्स. ओपन द स्लिट and blow as hard as you can. It created sound because it vibrated. Sound needs a medium for propagation. Important topic. तुम तक साउंड पहुंचता कैसे है? तो ये लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, वो तो इलेक्ट्रिसिटी है. इट्स अ डिफरेंट मीडियम. बट रूटीन लाइफ में इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्पीकिंग, यू कैन डायरेक्टली लिसन टू मी बिकॉज एयर इज अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. साउंड बिना मीडियम के ट्रांसफर नहीं हो सकता. कैन यू डिजॉल्व शुगर इन नथिंग? नो, यू कैनॉट डिजॉल्व शुगर इन नथिंग. कुछ है ही नहीं, उसमें शक्कर डाल के मिक्स कैसे करोगे? बट you can have a medium inside which you can dissolve sugar. You can have milk, water, tea, coffee, शरबत, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल में डालो, मुझे क्या फर्क पड़ता है. बट यू कैन डिजॉल्व शुगर इन अ मीडियम. तो मीडियम की नेसेसिटी जो होती है वो साउंड को भी है. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate? Propagate मतलब travel. Actually, sound needs medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is vacuum in the vessel. The sound cannot travel through vacuum. तो sound को medium की ज़रूरत है. और ये याद रखना कि 3 तरह के medium होते हैं through which sound can pass. Sound can pass through air, sound can pass through liquid, and sound can pass through solid. Air basically means gas. So solid, liquid, gas, तीनों में से कोई एक चीज तो होनी ही चाहिए, वरना साउंड ट्रैवल नहीं करेगा.
and absence of gas, absence of liquid, absence of solid is called vacuum. और जहां कुछ नहीं है, empty space, there sound cannot travel. How do we prove that sound can travel through water? It's a small activity where you take the bell and ring it outside. You will easily be able to hear because there is air and sound can travel through air. But when you ring the bell inside water, तो बाहर ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगा, बट जब कान यहाँ पे लगा के सुनोगे तो you will properly hear the bell ringing, so sound can travel through water also. And another activity is this, very simple. Take a stick, take a long stick, take a big foot rule or any big piece of solid. This boy is making noise here. He is tapping it. टक 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 कर रहा है और वो टक टक एकदम धीरे कर रहा है कि हवा में नहीं सुनाई देगा दोनों को. बट दिस बॉय इज होल्डिंग द स्केल नेक्स्ट टू हिज हियर एंड दिस इज अ सॉलिड. द बॉय विल लिसन टू अ लार्ज ह्यूज नॉइज साउंड. तो ये छोटा सा टक टक यहां पे जोर जोर से सुनाई देता है बिकॉज साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो. वो बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, because yes, sound can travel through the walls. Another easy activity, अगर तुम्हारे पास स्टिक या कोई बड़ी स्केल नहीं है तो डाइनिंग टेबल के एक एंड पे तुम बैठ जाओ तुम्हारा कान लगा के और दूसरे एंड पे टेल somebody to knock. You will easily be able to hear that sound. जोर से साउंड आएगा. A little knock, tuck, will be a big tuck if you keep your ear next to the table. That is another way. And telephone से तो जरूर खेला होगा. So this is also how sound can travel through a solid. The string is a solid material and the vibrations are passing through the string and he is able to hear it. Of course it's not very clear, it's just for young kids to have fun, but this proves that sound can travel through solids. We hear sound through our ears. तो अब कान के बारे में कुछ समझते हैं कि कैसे कान को पता चलता है कि आवाज आया. The shape of outer part of the ear is like a funnel. When sound enters, it travels down a canal at the end, which is a thin stretched membrane. It is called eardrum. तो हमारे जो कान का कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा है. जब आवाज आती है चारों तरफ से, all that sound through this is concentrated inside the canal. सबको डाइवर्ट कर देते हैं, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ. कहाँ अंदर जाओ? कैनाल में, द ईयर कैनाल. और कैनाल के अंदर क्या है? एक पर्दा है, अ कर्टन, अ मेम्ब्रेन. एंड दिस मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स. That's how we listen to sounds. And this is called eardrum. तो eardrum एकदम पतला, अभी जो रियल वोकल कॉर्ड्स देखे थे कैसा मेम्ब्रेन था, वैसा मेम्ब्रेन होता है. सो आउटर ईयर इज लाइक अ फनल, और फनल का काम है सबको चैनलाइज करना. यू हैव सीन अ फनल. तेल भरवामा काम लागे, पेट्रोल भरवामा, ऑयल भरवामा. दिस इज अ फनल जो सारी चीज को एक डायरेक्शन में गाइड करता है. सो आवर ईयर इज अ फनल एंड ऑल द साउंड गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द कैनाल, और कैनाल के एंड में है ईयर ड्रम. इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम. तो ये एक्टिविटी है जिसमें हम टिन में से ईयर ड्रम बनाएंगे. So there is no great video about this activity, therefore I will not be able to show you anything. But एक मुखवास की प्लास्टिक की डब्बी लो और उसके ऊपर बलून को स्ट्रेच करके लगा दो. You put the balloon on top of that
bottle. This bottle, this stretched membrane behaves like an eardrum. And how does it work? When sound falls on the eardrum vibrates. और eardrum vibration दिखेगा नहीं, ये रबर का वाइब्रेशन दिखेगा नहीं, तो उसके ऊपर राइस रख दिए. So when you keep rice on top of it and then make sound below it, the sound waves will travel and the sound waves will hit the drum, and when it vibrates, the rice will fall down. Hence proved that the membrane is sensing vibration. तो हमारा जो कान है वो वाइब्रेट होता है, इसलिए सुनाई देता है. So the eardrum is like a stretched rubber and it senses the vibration. वो वाइब्रेशन सेंस करके क्या करता है? It sends the vibrations to the inner ear, and from the inner ear the signal goes to the brain, और तब सुनाई देता है. जब तक सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचती, we cannot hear. So this is a wonderful diagram of ear. बहुत कॉम्प्लेक्स है, but I'll teach you how to draw a simple one. But first understand the labeling. साइंस में कोई भी डायग्राम करो, labeling is important. This is outer ear, which acts like a funnel which channelizes the sound inside the canal. The canal is called middle ear. Outer ear के बाद आता है middle ear, और middle ear के end में होता है tympanic membrane, ये, और कान का पर्दा. एंड ये वाइब्रेशंस जो होता है, ये वाइब्रेशंस की वजह से उसके पीछे इनर ईयर है. दिस एंटायर बॉक्स इज इनर ईयर. तो व्हेन साउंड फॉल्स ऑन द membrane vibrates. When the membrane vibrates, bone number 1, bone number 2 and bone number 3 vibrates. और ये तीनों हड्डियां, these are the smallest bones of our body. Malleus, incus, stapes, ये तीनों के नाम है. तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स, तीन छोटी से छोटी हड्डियां वाइब्रेट होती, एंड दैट वाइब्रेशन goes to this round jalebi kind of thing called cochlea. और कोक्लिया में साउंड को प्रोसेस करने के बाद ये नस है जो उसको ब्रेन तक पहुंचाती, कॉल्ड ऑडिटोरी नर्व. So whenever you draw the diagram of ear, remember labeling is a must. Outer ear, middle ear, inner ear. Tympanic membrane, malleus, incus, stapes, cochlea and auditory nerve. अब मैं दिखाता हूं सिंपल फॉर्म में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको. एक, दो, तीन. ये हो गया आउटर ईयर, मिडल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अब जो बोन्स ड्रॉ करना है, यू डोंट हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज अबाउट दैट. ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, और वो बोन से अटैच्ड राउंड 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 कोक्लिया, और कोक्लिया से निकलती हुई ऑडिटरी नर्व. दैट्स ऑल. Even this much, with all labels, you will get full marks. तो ये भयानक सा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. दिस एनलार्जमेंट इज शो यू बोन नंबर 1, 2, 3, जलेबी जैसा कोक्लिया एंड द ऑडिटरी नर्व. Let me show you a nice animation of human ear. You will understand everything. How are you listening to this music right now? Well, you might know that your speakers are creating sound and your ears are listening to it. But there's a lot more going on over here. You see, all your speakers are doing right now is vibrating the particles of the air close to it. Then they vibrate the air molecules close to them, and so on and so forth.
And we call this a sound wave. And eventually, when the air molecules close to your ears start vibrating, we hear sound. But how does something as boring as air molecules going back and forth make us experience something like this? Well, for that, we need to look at our ear carefully. I mean the entire structure of the ear. So let's look at how the different parts of the ear work together to make us experience sound. Now you can see this is funnel shaped outer ear, middle, and this is inner ear. Sound wave, इसको पिन्ना बुलाते हैं, पिन्ना, Pinna. So the sound waves are going inside and hitting the membrane. The membrane vibrates. Membrane vibrates, the three bones vibrate. The three bones vibrate, the cochlea vibrate, and cochlea sends the signals to the brain. That's how you experience sound. As you can see, the eardrum also separates the outer ear from the middle ear. This brings us to the middle ear. The middle ear consists of the three tiniest bones of the human body, and they're together called the ossicles. And they have pretty cool names. They're called the malleus, the incus, and stapes. And here's the actual picture of these three bones. And because of their shapes, they're also commonly called as the hammer, the anvil, and the stirrup. Stirrup is where you rest your feet when you're riding your horse. Alright, so as the eardrum vibrates, you can see the ossicles also start vibrating, transferring the vibrations from the eardrums to the inner ear. Now their main job is to increase or amplify the pressure of the sound waves when it reaches the inner ear. But why do we need to increase the pressure of the sound waves? Now getting into the technical aspects of sound.